So your topic is importance of data models. So let's understand what data model is. Basically, first let's understand what a model means. A model is basically an abstract of real world. If you have to define a model basically means an abstract created of real world. Why do I use word abstract? Is because a model could be, say, a minimization, or you could say a design and layout for anything that is present in the real world, right? So you need not show everything in detailing, right? So model would create just an abstract for the people to see, okay, of whatever is existing in the real world. So when I talk about data model is basically a graphical representation, okay, of whatever data structure that you have in your database, okay, उसको हम हमारा डेटा मॉडल बोलते हैं। हम जब भी हमारे डेटा जो हमारे डेटाबेस में स्टोर्ड है वो कैसे स्टोर किया गया है, ओके, उसका जब हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, वी कॉल इट एज योर डेटा मॉडल। Okay, data models are basically also known as communication tools. Why you call it like that is because that graphical representations helps you know how things are working and helps in a better way of communication through your data models and the structure that is present in your database. So what is the basic building block of database? First, let's understand that and then we'll move on to how these models are made. Okay, so your first basic building block of a data model is your entity. You have three parts mentioned here. You also have constraints that will take in the further part. Okay, the first part is your entity, and your second one is your attribute. Your entity means any person, place, thing, or a event. When you're drawing a diagram, kids, okay, the basic model, okay, or the ER model that you call it as, okay, or any model that you draw, you define it with your entity, with your attributes, and your relationship. Okay, so these are the basic building blocks for your model that you create. So the first part is your entity. Your entity basically could be any person, place, thing, or event. Okay, जो भी डेटा जिसके बारे में भी स्टोर्ड है, ओके, जैसे मैं बोलूँ कस्टमर, ओके, अगर मेरे डेटाबेस में कस्टमर का डेटा स्टोर्ड है तो कस्टमर एक एंटिटी हो गया मेरे लिए। अगर एक डेटाबेस है जिसमें टीचर्स का डेटा स्टोर्ड है, स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर्ड है, तो स्टूडेंट, टीचर, ये एक पर्सन है, राइट? या यू कैन हैव एनी थिंग इन द रियल वर्ल्ड जिसके बारे में हमने डेटा कलेक्शन किया है, उसको हम एंटिटी करके डेटाबेस मॉडल में डिफाइन करते हैं। ओके, एंड योर नेक्स्ट पार्ट इज योर एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एंटिटी दैट यू हैव। ओके, जो कस्टमर मैंने बनाया, ठीक है, अब इस कस्टमर का आईडी होगा, कस्टमर का फर्स्ट नेम होगा, कस्टमर का लास्ट नेम होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो इंफॉर्मेशन मैंने डेटाबेस के अंदर इस पर्टिकुलर एंटिटी के बारे में डाला है, ओके, दैट बिकम्स माय कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर दैट पर्टिकुलर एंटिटी। ओके, उस एंटिटी का वो कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है। तो your attribute basically is the characteristic. Now suppose if I have student as an entity, एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट, और उस स्टूडेंट के अंदर मेरे पास डिफरेंट रिकॉर्ड्स है, जैसे स्टूडेंट का आईडी होगा, स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट का फादर्स नेम होगा, स्टूडेंट का फोन नंबर होगा, स्टूडेंट का जेंडर होगा। तो क्या हो गया कि जिधर ये जो मेरा टेबल है नेम्ड स्टूडेंट, ये बन गया मेरा एक एंटिटी जिसके बारे में मैंने डेटा कलेक्ट किया है मेरे डेटाबेस के अंदर। ओके, और इसके जो कॉलम्स है, ये जो स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये बन गए हमारे एट्रीब्यूट्स। ओके, moving on to your relationship basically is the association between your entities that is present. तो समझो हमारे पास एक एंटिटी है वन और एक सेकेंड एंटिटी है, वी हैव टू एंटिटीज। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो डिनोट हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ
relationship as a part of your model. Okay, so attributes, if you see in this diagram, kids, attributes you denote with an oval shape, entity you denote with an rectangle shape. Okay, and the association between these two entity, basically a relationship, okay, you denoted with a diamond. Now this is how you represent, and this is how you have to for an diagram. You cannot change the shape and a size. Basically एक model जब होता है ना kids, whenever a model is released, there are some protocols that you need to follow. Okay, even when you have a particular network model, हमारे पास कोई protocol होता है, right? You have to follow that so that everybody ग्लोबली कुड अंडरस्टैंड दैट. तो हम ये हमारे हिसाब से शेप एंड साइजेस नहीं दे सकते. ओके, सो दिस मॉडल हैज सम प्री डिफाइंड shapes and size in which you have to fit in your database working. Okay, and to map this relationship, ये जो दो एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप है, या तुम एसोसिएशन बोल सकते हो, इनका डिफरेंट मैपिंग कार्डिनलिटीज होता है. Okay, number one is one to one, number two, one to many, number three, many to many. What exactly is this? We'll see in the further part of the video. Your next part is your business rules. Okay, your business rules, kids, are basically any policies or principles or procedures, okay, that you write for a specific organization. Everything that you are having in your database. Okay, suppose if you say my B is related to A, उसका मैं business rule लिख के रखूंगी. I would write it in some paper, I would document it, I will keep it properly up to date so that it is easy for me to understand. अगर समझो मैंने कोई database लिखा है, okay, उस database का मैं business rule लिखूंगी. Okay, when I write the business rule for something, it helps me to understand what are the different procedures that I followed, or what are the different policies that it goes through. Okay, and what are the principles that this particular database stands on, what actions have I taken. Okay, all of this basically I write it down, I jot it down in normal statements, and I store it, okay, in a form of information. So if I have to say relationships को अगर मैं कोई बिजनेस रूल के हिसाब से डिनोट करना है, तो मैंने जैसे ऊपर डायग्राम में बताया कि दो एंटिटी और उनके बीच में एसोसिएशन है, तो इसका बिजनेस रूल्स कैसे होगा? बी इज रिलेटेड टू ए एंड ए इज रिलेटेड टू बी. आई कुड से student is related to teacher and teacher entity is related to student. This is the business rule line that you write for a particular model. Moving on to your next part, that is how your data models basically evolved with times. Okay, तो हमने बोला कि मॉडल मतलब किसी भी रियल वर्ल्ड के चीज का एब्स्ट्रैक्ट बना देना. ओके, यू हैव टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ समथिंग दैट इज प्रेजेंट. जैसे हम बिल्डिंग्स बनाते हैं. ओके, बिफोर मेकिंग अ बिल्डिंग हमारे पास उसका एक मॉडल होता है, ठीक है, ताकि हमारे पास उस चीज का विजुअलाइजेशन रहे कि ये कैसे दिखने वाला है. द सेम बेस व्हेन यू हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस, ओके, you create a model of it so that you could understand what is the layout basically of what you're creating and how would you connect one thing to other. So basically you have a graphical representation of a particular database that you're gonna create. Now we'll look at different types. There are many other. Okay, so we will work with these 5 to 6 important types of model that would help us further in our projects as well. Okay, so the first model that is there, that's known as relational model. The word relational, as we learned in our previous lectures as well, the word relational in database means storing data in the form of tables, and these tables consist of rows and columns. Okay, there are different rows and different columns which are part of table, and these rows consist of records. For your information to note, a table, okay, could also be called as a relation. A column could also be called as an attribute. A row could also be called as a tuple, okay, or a record. Fine.
नाउ एज यू सॉ, मैंने जब तुमको ऊपर ईआर मॉडल के बारे में, बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में बोला, हमने क्या बोला कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है किड्स? बेसिकली एट्रीब्यूट तुम्हारा कॉलम नेम ही है, राइट? तो इसीलिए कॉलम को हम एट्रीब्यूट बुला सकते हैं या एट्रीब्यूट को हम कॉलम बोल सकते हैं। हम किसी भी टेबल को रिलेशन बोल सकते हैं, क्योंकि जो टेबल को हम एंटिटी में डालते हैं उन दो एंटिटीज के बीच में हम एसोसिएशन दिखाते हैं। और रो को हम टपल्स भी बोलते हैं, ओके, कॉल इट अ टपल और अ ट्यूपल, द वे यू वांट टू प्रोनाउंस इट, ओके, एंड you can save records in it, so it's also known as record that has been recorded in a particular row or a tuple. Okay, so relational model basically does what? Relational database मतलब storing things in the form of table. तो इसका मॉडल क्या represent करेगा? ये मैप करेगा डिफरेंट टेबल्स को, क्योंकि जब हम रिलेशनल मॉडल ये वर्ड यूज करते हैं तो जो भी टेबल्स हमारे पास है उन टेबल्स का मैपिंग, ओके, हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब डेटाबेस के अंदर मेरे पास आरडीबीएमएस के अंदर एक टेबल है नेम्ड एजेंट, और ये है उसके डिफरेंट कॉलम्स, एजेंट कोड, एजेंट नेम, एजेंट फर्स्ट नेम, एक्सेट्रा। Okay, there are different columns that are present in this particular table, and there is another table that's known as your customer table. Okay, so your customer table has different columns. Now there are few primary keys in this. Okay, we'll learn it in further part what basically key means. Okay, these are your two tables that exist. तो इन दोनों टेबल के बीच में हमने रिलेशनशिप दिखाने के लिए ये लिंक यूज किया है और ये एरो यूज किया है, एंड इसका कार्डिनलिटी हम दिखा रहे हैं। ओके, वेर यू आर सेइंग दैट वन एजेंट कुड डील विथ मल्टीपल, ओके, कस्टमर्स। एक पर्टिकुलर एजेंट जो है, one, you have written your word one and this infinity sign for multiple customers, so I would say कि one agent could handle multiple customer. So ये डायग्राम देख के मुझे ये समझा कि मेरे डेटाबेस के अंदर दो टेबल है जिनके ये दो प्राइमरी की है, इतने सारे इनके अंदर कॉलम्स है जो भी यहाँ पे लिस्टेड है, और इनके बीच में रिलेशनशिप है। एंड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू दे हैव? इट इज वन टू many. And this diagram helped me understand how basically my database is built. For that's the reason why we create a model. Let's move on to a second type. That's your hierarchical model. Okay, your hierarchical model, basically even when you learn in your coding, okay, you learn hierarchy, you learn inheritance, you learn about parent child relationship, correct? So basically even when you in a database, okay, you have any hierarchy that has been created, there is a root entity, and if there are multiple segments inside it, okay, or you could say multiple components as inside the root segment, okay, then you build up a parent child relationship, and this is how you denote it. So basically your final assembly is your root segment. Okay, your component A, B, C is the child class for your particular final assembly. That means these are your child entities, okay, that is related to your root segment. Okay, and then you have assembly A, which is again a child segment for your root child, that is component A, and part B is again the child entity that is a part of a root child, that is assembly A. Okay, so it's the same way for component C. We have hierarchy and we have parent child relationship, and these kind of entities, okay, or records are connected through, and these arrows here are known as links. And this is how you represent this in the form of a tree like structure. Moving on to the next one, that is your network database model.
Okay, your network database model kits also connects the parent to the child, but the difference between your hierarchical and network is in your hierarchical network model, you will see there's a single parent and you could have multiple child. Okay, when you're talking about network, you just have to connect it. Okay, if there are, suppose now this invoice here is a child, correct, is it could be a child or the further entity that is present, that is related, but it is related to two root class here. Okay, one is sales ERP and the other is customer. Basically, sales persons will create your invoice, okay, and these invoice could be given to your customer. So even your customer is related, even your sales is related. Basically, this is like a graph structure, okay, rather than your tree like structure. Okay, so here you can have more than one parent entity or a record, and over there you have one parent multiple child, one parent multiple child class. But in network you could have multiple parent connected to one subsection of the entity that is present in your database. And that's about your network database model. Moving to the next part, that is your entity relationship model. This is a very important part because when we are doing our TY projects, this is a diagram that we draw at the initial stage of a project so that we could understand what is the workflow of my database according to the working that we have decided for a specific project. So starting with this, as we saw the basic of it in the above part, okay, your entity relationship model is basically a systematic way of describing what a business process is. So that's what we said, whatever our database is, whatever our business process is, okay, whatever our working of a project is going to be, उसका एक सिस्टमैटिक वे से हम उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग एन ईआर मॉडल in your database. So your database here, for an example that we have taken here it says there is an entity student in your database and there is an entity named college. Now the student is studying in your college, so the relationship built between these two entities is that the student is studying in a particular college. Okay, now this student has different attributes. मतलब ये जो टेबल है, मेरा जो एंटिटी है स्टूडेंट, इसके अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब ये सारे कॉलम्स है. ओके, तो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, ये इस पर्टिकुलर एंटिटी का एट्रीब्यूट बन जाता है. Now over here, if you see college, your college ID, college name becomes the attribute of your entity college. और इन दोनों के बीच में study इनका relationship है या association है. So looking at this diagram, I could understand that my database has these two college with these many attributes, and this is how they are associated or they are related. So this is about entity that we just discussed. Okay, entity could be any object or a component of a data, okay, in which you have multiple attributes. And what this M and 1 mean, we'll look at the cardinality part. Okay, and these are the relationship that has been shown. Now let's complete the entity part first and then we will move on to the cardinality that we are talking about. Okay, so there's a type of entity that's known as weak entity, and it is denoted by two rectangles because it's weak. What does it mean? Okay, what do you mean by saying that weak entity in a particular ER diagram? Okay, now here, okay, so you have two entities. One is your bank, the other one is your bank account. Okay, but here if you see, if there is no bank, if this bank entity does not exist, the bank account will also not exist because bank account has dependency over your bank table. Okay, that means this particular entity could not stand on its own. ये independently उधर सस्टेन नहीं कर सकता. डेटाबेस के अंदर
अगर ऐसा कोई एंटिटी है जो खुद से सस्टेन नहीं कर सकता, उसका कोई तो डिपेंडेंसी है, और अगर मैं उस पर्टिकुलर एंटिटी जिस पे उसका डिपेंडेंसी है उसको किल कर देती हूँ, या उस पर्टिकुलर एंटिटी को निकाल देती हूँ उस जगह से, तो ये भी ऑटोमेटिकली सस्टेन नहीं कर पाता। ओके, दैट मीन्स ये डिपेंडेंसी दिखाता है किसी और टेबल के पास और किसी और टेबल के ऊपर। ओके, सो बैंक अकाउंट shows dependency on your bank entity, right? So that's why your bank account is known as weak entity here, because it depends on another entity and it cannot stand by its own. That's why this is known as a weak entity. Moving on to your next part, that's a strong entity. So if you see, bank here is a strong entity because even if a bank accounts are closed, bank table, okay, a few bank accounts things are closed and not all bank accounts are closed, right? So even if this table is removed from this place, this entity could stand on its own. Okay, over here it doesn't have complete dependency on it. Yes, it does take records from there. Okay, but it doesn't have complete dependency. मतलब अगर ये नहीं भी रहा, it will work with something else and still be there in the database. And strong entity is being denoted by a single rectangle, basically how we denote our entity. And strong entities are always having a primary key in the set of their attributes, and that primary key is basically referred by others and they use it as a foreign key, okay, for their further work. A particular entity uses the primary key of a strong entity and takes reference and works with it. That's why it has more of dependency over your strong entity part. So that's about your entity. Entity, I just give a quick revise to you. Entity basically is an object present in the form of data in your database. Okay, we deal with two types of entity. One is weak and the other is strong entity. Weak entities are denoted by a double rectangle, strong entity by a single rectangle. Okay, weak entities could not sustain or are dependent over your strong entities. They could not sustain independently, wherein the strong entities could sustain and be there and have an existence, okay, even if the another entity is removed out from the schema or your particular structure. Moving on to the attributes part, as I told you, there are three building blocks that we learned. Okay, so that's a part of your ER diagram. For database, we learned three building blocks. The first one was entity. We learned what an entity is and what are its types. Okay, the next part is your attributes, and then we'll learn what are the different types of attributes. Okay, so attribute, basically how I told you in the previous part, that is attributes is the characteristics that particular entity represents. Okay, it has been denoted in an oval shape as we saw there, and we'll also see in your next example. Okay, so there are four types of attributes that we'll cover: key attributes, composite attribute, multi-valued, and derived attributes. So it's number one, that's a key attribute. Okay, key attribute could also be called as a primary key that you have. Okay, key attribute means, if you see this diagram, there is one entity named student, okay, and you have these four attributes for this particular entity, that is roll number, name, age, and address. Okay, these are your four attributes that is connected to this particular table. Now key attribute basically means, kid, okay, a attribute of a table that could be uniquely identified. तो ये एक ऐसा attribute होता है
जो यूनिकली आइडेंटिफाई हम उसको कर सकते हैं। मतलब इस पर्टिकुलर कॉलम में कोई भी डेटा रिपीट नहीं हो सकता, यू कैनॉट हैव डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। ये जो रोल नंबर है इसको हमने अंडरलाइन किया है क्योंकि की एट्रीब्यूट या प्राइमरी की जो होता है एक पर्टिकुलर टेबल का, ओके, उसे हम अंडरलाइन करके डिनोट करते हैं हमारे ईआर मॉडल के अंदर, ताकि जब मैं ये ईआर मॉडल देखूं मैं समझ पाऊं, क्योंकि मैं तो डेटाबेस के अंदर नहीं जाने वाली, ना मैं कोई क्वेरी फेच कर रही हूँ फॉर नाउ। मुझे सिर्फ ये समझना है कि आउट ऑफ दिस टेबल दैट इज स्टूडेंट, इन चारों में से मेरा प्राइमरी की कौन है, सो आई कैन इजीली नोट दैट इज बाय लुकिंग व्हाट इज अंडरलाइन। सो ये जो रोल नंबर पार्ट है ये मेरा अंडरलाइंड है। So if this is underlined, that means that this denotes a key attribute. Okay, basically a primary key. तो primary key क्या होता है कि primary key means okay you can uniquely identify a particular data. Okay, uniquely identify a particular data means there has to be no repetitions. Okay, you cannot repeat थिंग्स लाइक रोल नंबर। अगर एक स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है तो मैं और एक स्टूडेंट को 1 रोल नंबर नहीं एलोकेट कर सकती। आई कैन नॉट एलोकेट same roll number to multiple students because this is saying that it needs unique values to be present over here. So moving on to your next attribute, that's your composite attribute. Composite attribute basically kids is a combination of other attribute to form one particular attribute. मतलब student का एक attribute है address, but address किससे बना है, पिन कोड, स्टेट, कंट्री। मतलब ये एट्रीब्यूट बनाने के लिए मुझे और 3 एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करना पड़ा। आई हैड टू कंबाइन दीज 3 एट्रीब्यूट्स to create one particular attribute and store it in my entity, that is student table. Okay, so that's known as your composite attribute, means you're combining your few attributes to form another attribute, and which is a characteristic that is being exhibited by a particular entity. Moving on to your multi-valued attributes. Okay, your multi-valued attribute basically means kids, if in this table you see, this is your table student. You have student phone number as an attribute, student name, your age, your date of birth, and student ID. Okay, so you will see something different over here as we know what this is. Now this is underlined, that means this is my key attribute. Okay, now this has double oval. Okay, your double oval shape means multi-valued attribute. मतलब जब भी मैं किसी एट्रीब्यूट को मल्टी वैल्यू डिफाइन करती हूँ, मतलब इस एट्रीब्यूट के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू मैं रख सकती हूँ या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड मैं स्टोर कर सकती हूँ। एक पर्सन का एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर हो सकता है, राइट? वी कैन हैव मोर देन 1 फोन नंबर फॉर अ पर्सन, वी कैन हैव मोर देन 1 address for a person, so that becomes your multi-valued part, correct? Obviously you cannot have more than one name for a person, you cannot have more than one age for a person, so over there you cannot define that to be multi-valued. So the attribute which could allow multi-value, you denote it with a double oval that is present in your database, okay, in the form of a multi-valued records in a particular table. Okay, what this is, we'll come to it. Okay, what this dotted oval means is your next part, that's your derived attribute. Okay, so derived attribute basically means kids, अगर मेरे को डेट ऑफ बर्थ एक पर्सन का मिल जाता है तो डेट ऑफ बर्थ से मैं उनका एज निकाल सकती हूँ। इफ आई आस्क अ पर्सन फॉर हिज डेट ऑफ बर्थ, आई नीड नॉट आस्क हिम फॉर हिज एज और हर एज, राइट? क्योंकि मैं डेट ऑफ बर्थ से उस पर्टिकुलर पर्सन का एज निकाल सकती हूँ। अगर मैं एक स्टूडेंट से उनका डेट ऑफ बर्थ ले लो, आई कुड से व्हाट इज द एज ऑफ द स्टूडेंट, राइट? सो डेटाबेस में ऐसे कई फील्ड्स होते हैं जो डिराइव्ड होते हैं किसी और से। ओके, तो मैंने बेसिकली ये यूजर से इनपुट नहीं लिया है, मैंने डेट ऑफ बर्थ उनसे लिया है और उससे मैंने एज को क्या किया है,
derive किया है. तो each year becomes my derived attributes from some other attribute. That's why I represent this in a dotted line form. Okay, so if you see this diagram, we have this entity, we have associated it with different attributes that it has. Okay, and this is your normal attribute that you have. This is your key attribute because it's underlined. This is your multi-valued attribute because it is double oval, more than one value in a particular column. Okay, or row, for a particular row basically you could say. Okay, and this is your age that is derived from some other attributes. Moving on to the next part, that's a relationship, or you could call it how you denote your mapping cardinalities in your relationship. Okay, we just learned that relationship is denoted with a diamond shape. Okay, और हम different entities के बीच में relationship exhibit करते हैं. Okay, you can map two entities with the help of this relationship that you have, and there are different mapping cardinalities, okay, that exist, and we'll learn what they mean. There are three types basically. Number one, one to one. Number two, one to many. Okay, many to many. And number four, many to many and many to one. Okay, so there are four types of cardinality that we are going to see over here. So your number one is one to many to one, and many to many. So talking about your one to one relationship, okay, this is your two entities, person and passport. So one person can have one passport. तो ये रिलेशनशिप क्या बोल रहा है कि एक पर्सन के पास एक ही पासपोर्ट रह सकता है. तो ये दो एंटिटीज है मेरे पास जो रिलेशनशिप से एसोसिएटेड है, और यहाँ पे मैं मैपिंग कार्डिनलिटीज, या ये जो मैपिंग है इन दोनों के बीच में, इनके बीच में क्या कार्डिनलिटी एग्जिस्ट करता है वो लिख रही हूँ. तो अगर मैंने यहाँ पे वन लिखा और वन लिखा, मतलब एक पर्सन के पास एक ही पासपोर्ट हो सकता है. सो दिस एग्जिबिट्स अ रिलेशनशिप एंड शोज मी what kind of relationship do they show. Moving on to one to many relationship. One to many relationship basically means, okay, one customer, if you see this example, customer places order. ठीक है, तो एक कस्टमर कैन प्लेस मल्टीपल ऑर्डर. इफ यू हैव वन कस्टमर, यू कैन हैव मल्टीपल ऑर्डर्स फॉर दैट पर्टिकुलर कस्टमर. दैट्स व्हाई यू डिनोट दिस as one customer and multiple with M. So you can use different symbol kits. Okay, there are different ways of showing this cardinality. As ऊपर हमने देखा था, we use an infinity symbol. There are few people who use dotted things. So there are different ways of showing this cardinality, but the logic lies the same. Okay, so over here you would see one to many. So one customer can place many orders. So an M here and one here, because that's the relationship that they show. Moving on to your next one, that is many to one relationship. Okay, so basically many to one relationship, your many student, okay, study in one college, right? So you have many to one. Many students could study in one college. तो ये relationship को हमने क्या cardinality दिया? M and N. That means many students studying in one particular college. So you have many to many here. Okay, many students can be assigned with many project. ऐसा हो सकता है कि एक स्टूडेंट को एक सेमेस्टर के अंदर 4 प्रोजेक्ट करने मिला हो. ओके, इट इज पॉसिबल. सो ये रिलेशनशिप क्या बताता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक से ज्यादा प्रोजेक्ट दिया गया है. सो M and M. So this is your many to many relationship. Now there are two kinds of entity sets that we have to learn. Your first part is your total participation, okay, and your next part is your partial participation. The entity set के अंदर there are two parts that we have. One is total participation and the other is your partial participation. Okay, now we learned what an entity is, we learned what an attribute is, we learned what relationship is. In entity, in attribute, in relationship, we learn the inner parts of it. In your entity sets, when you're talking about your entity sets that you made, there are two
parts that are important to know. One is total participation and the other is your partial participation. Okay, so total participation here means that it represents each entity in entity sys must have at least one relationship in the relationship set. मतलब एक पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर ना किड्स एटलीस्ट एक स्टूडेंट तो होना ही चाहिए. मतलब इस एंटिटी के बिना ये स्टैंड ही नहीं कर सकता. ओके, मतलब कॉलेज का टोटल पार्टिसिपेशन है इससे. ओके, मतलब अभी समझो यहाँ पे, समझो हमारे मुंबई में 12th पास हुए हुए 1000 बच्चे हैं. ओके, देर आर 1000 स्टूडेंट. और समझो ये कॉलेज आईडी है एस एम शेट्टी का. ओके, और इसका कॉलेज नेम है समझो 863. ओके, द कॉलेज आईडी एंड द कॉलेज नेम इज एस एम शेट्टी कॉलेज. ओके, एंड दिस इज माई कॉलेज एंटिटी. तो ये एक कॉलेज है, करेक्ट है. इस कॉलेज में ओके ये जो एंटिटी है, ओके यहाँ पे समझो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है. ठीक है, यहाँ पे 1000 स्टूडेंट है. इन स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट इस कॉलेज का पूरा यूटिलाइजेशन करेंगे, क्योंकि इन्होंने अगर यहाँ पे एडमिशन लिया, मतलब मैंने इन स्टूडेंट्स को यहाँ इस कॉलेज एस एम शेट्टी कॉलेज में, समझो इसमें से 100 स्टूडेंट ने एस एम शेट्टी कॉलेज में एडमिशन लिया है. मतलब ये जो एंटिटी है इसका फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, राइट. इनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होगा, इनका हर चीज मैं कंप्लीटली यूज करूंगी, राइट. और ये टेबल का मैंने सिर्फ कुछ चीजें या कुछ नाम ही उठाए हैं. दैट मीन्स मेरा ये रिलेशनशिप बनाने के लिए ये टेबल में से थोड़े पार्ट्स लिए गए थे और ये टेबल का सारा डेटा यूज हुआ है, करेक्ट है. इसलिए इस टेबल का इस रिलेशनशिप में टोटल पार्टिसिपेशन है. ओके, इन दिस टेबल दिस पर्टिकुलर एंटिटी और अ टेबल हैज टोटल पार्टिसिपेशन, और उसको हम दिखाते हैं विथ डबल लाइन. वी डिनोट इट विथ अ डबल लाइन बिटवीन द रिलेशनशिप एंड दिस. मतलब किसी भी स्टूडेंट को किड्स द रिलेशनशिप इज व्हाट स्टडी इन. सो दिस कॉलेज okay has total participation with the study in part, right, but the student doesn't have total participation with study in relationship, क्योंकि not all students are studying in SM Shetty. ओके, सो दिस टेबल का सारा डेटा इस रिलेशनशिप से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. इस रिलेशनशिप के अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. दैट्स व्हाई you call this to be in a partial and this with a total participation for your entity set. So here if you see, this is known as a partial participation. Basically a doctor may diagnose patient. Okay, so बहुत सारे doctors होंगे, बहुत सारे patient होंगे. Not all doctors may diagnose all patient. Not all patient may visit to the same doctor. ओके, तो इस टेबल का मे बी अभी यहाँ पे 1000 डॉक्टर्स के नाम है और यहाँ पे समझो 10,000 पेशेंट्स के नाम है. ठीक है, सारे पेशेंट इस डॉक्टर से मिले ऐसा जरूरी नहीं है. नॉट एवरीबडी में गेट देम सेल्फ डायग्नोज. सो दो डॉक्टर्स डायग्नोज पेशेंट्स, ओके, बट नॉट ऑल पेशेंट्स में गो एंड डायग्नोज टू डॉक्टर एंड नॉट ऑल डॉक्टर में ऑल्सो अग्री टू हैविंग गेट द पेशेंट डायग्नोज. तो इनका सबका रिलेशनशिप जो है वो partial participation का है. Okay, so let's take another example to make this little more clear. Okay, I'll just tell you orally about this example. Now suppose one particular management, okay, is handling say BSc IT department, okay, is handling BMM department, is handling BMS department. समझो one particular management, I call it as complete management, okay, that may involve all the principal and everything. Suppose, okay, that may involve multiple principal name and multiple vice principals name, and I may have BSc IT, okay, as my other entity. तो ये जो भी मैनेजमेंट का पार्ट है, क्या हर मैनेजमेंट का बंदा बीएससी आईटी को हैंडल कर रहा है? नहीं. बीएससी आईटी के कुछ पार्ट्स, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे. जैसे देयर वुड बी वन प्रिंसिपल फॉर बीएससी आईटी, देयर वुड बी वन प्रिंसिपल फॉर वाइस प्रिंसिपल और टू वाइस प्रिंसिपल फॉर बीएससी आईटी. ओके, अगर हमने ऐसे
एक वाइस प्रिंसिपल और एक प्रिंसिपल को रखा है, मतलब मैनेजमेंट के अंदर 10 प्रिंसिपल्स का नाम है, पर उसमें से सिर्फ एक ही प्रिंसिपल बीएससीआईटी को मैनेज कर रहा है। तो जो मैनेजमेंट का टेबल है, जो डेटा है, उसका टोटल पार्टिसिपेशन नहीं है बीएससीआईटी के पास, बट बीएससीआईटी के जो बंदे हैं, ओके, ये सारा का सारा डेटा इज बीन यूज्ड इन दिस रिलेशनशिप ऑफ मैनेजिंग, राइट। पूरा बीएससीआईटी एक साथ मैनेज होगा। ऐसा नहीं होगा कि दो टीचर को एक प्रिंसिपल संभाल रहा है और चार टीचर को कोई और प्रिंसिपल संभाल रहा है, करेक्ट। इट इज नॉट लाइक दैट। मतलब बीएससीआईटी का मैनेजिंग इस रिलेशनशिप के साथ पूरा पार्टिसिपेशन है, दैट इज टोटल पार्टिसिपेशन। बट इफ यू टॉक अबाउट योर फर्स्ट पार्ट, ओके, दैट्स अ मैनेजमेंट टेबल, उनका पार्शियल पार्टिसिपेशन है विद द मैनेजिंग रिलेशनशिप।